Hello everybody, welcome to iExamB's Legal B. This is Amrita, your law faculty here at iExamB. In this video, today I'm going to discuss with you all about alternate dispute resolution systems and Arbitration and Conciliation Act. Do watch this video till the end as I'm going to discuss important questions also from this particular act from SEBI Grade A Legal Officer exam point of view. This topic has a good weightage as many questions have been witnessed in the previous year papers for SEBI Grade A Legal Officer examination. So do check this out. And there are some beneficial announcements for all the students. I would like to mention those first. Don't forget to subscribe and get all such kind of beneficial videos, content and updates of all the exam preparations. Don't forget to subscribe, and also if you have any queries from your side, you can reach out to us at hello@iexamb.com and you can also call on the number that is visible on the screen. इस वीडियो को आप पॉज करके उस नंबर को नोट डाउन कर लें या फिर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी हमें रीच आउट कर सकते हैं. You can visit our website for more details. So let me start first with the very beneficial announcements that I need to make with you over here. There are e-seminars that are going to come up very soon at iExamB. So these are the dates that I'm sharing with you. Firstly, RBI Grade B 2023 workshop is being conducted by Mr. Sushil Ragde sir. He's the ex-manager at RBI. 12th of January, 7 p.m. This is going to happen and there is a registration link as well in the description of this video. अगर आप participate करना चाहते हैं, you can register yourself. It's about your preparation guidance. आपकी जो भी queries हैं, आप reach out कर सकते हैं sir को. And other than that, we have another workshop for SEBI Grade A 2023 and it is held by CP Joshi sir, Chandra Prakash Joshi sir. He is the ex-manager, ex-AGM of RBI and he will be dealing with all the queries that students are having in their minds relating to why you should not wait for the notification, and he will be guiding you on that area. You can also register for that in the description of this video. There is a link. 13th of January को ये e-seminar होगा 7 p.m. को. And one more e-seminar is there 11th Jan 6 p.m. and that is about know all about private jobs, 6,000 plus private job opportunities के बारे में. Again CP Joshi sir is going to discuss about it in the same, that is at 6 p.m. इसका भी registration link आपको इस वीडियो के साथ मिल जाएगा. So don't miss these opportunities of interacting with such great mentors and take beneficial guidance from them. One more thing I would like to mention here itself, that iExamB is the only platform that is providing you mock tests at zero cost. So please take benefit of that as well. जितना benefit उठा सकते हो आप लोग उठा लीजिए. You are getting a lot of guidance. So don't forget to subscribe and prepare 50% faster with iExamB. आइए चलिए डिस्कस करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में, दैट इज ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम. दीज आर द वेरी ग्रोइंग एरियाज नाउ डेज. इट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट. आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की तरफ क्यों जा रहे हैं लोग आजकल? जस्टिस डिलेड is justice denied is something which we all know about. So this is what is one of the major reason. Next reason is about the costs, about time. All these things are there. Flexibility of procedure is there. And what is the thing is ultimately you are securing your object. So all these kind of disputes, ये criminal cases को applicable नहीं हो सकता है, but जिन cases के लिए applicable हो सकता है उसमें काफ़ी ज़्यादा growth है इस sector में आजकल. So let us understand what are these alternate dispute resolution systems and हमें इसे SEBI Grade A एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना है कि कौन सा एनैक्टमेंट है जो इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं. पहले कंसेप्ट समझना ज़रूरी है. दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग विद ADR, Alternate Dispute Resolution. Then I will be quickly covering, like a rapid fire, I will be covering 5 questions from Arbitration and Conciliation Act which are important, and I will also be telling you how you have to handle these questions. So let's start. आप इस PPT को भी डाउनलोड कर सकते हैं and you can keep it with yourself for your reference. Alternate Dispute Resolution System. ये जो alternate dispute resolution system है, जैसे मैंने आपको अभी कहा, it is talking about out of court settlement procedures, जिसमें आता है arbitration,
सबसे पहला नाम आर्बिट्रेशन ही आता है. मीडिएशन इज़ वेरी फेमस, अगेन वेरी कॉमनली यूज्ड. मैट्रिमोनियल मैटर्स में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. ऐसा नहीं है कि सिविल डिस्प्यूट्स में या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में भी होता है, ऐसा नहीं है वहाँ नहीं होता, बट मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में काफ़ी ज़्यादा मीडिएशन एक वी कैन से एक पार्ट ऑफ प्रोसीजर बन चुका है इन दोज डिस्प्यूट्स. एंड देन कंसीलिएशन यू विल फाइंड इन मेनी इंडस्ट्रियल मैटर्स, लेबर डिस्प्यूट्स एज वेल. So all these things are a part of this alternate dispute resolution system. ADRS भी हम इसे कह सकते हैं, because these are settling the disputes by alternate routes, by not the traditional practices that are going on in court. Out of court procedures are there, flexibility है, जैसे मैंने आपसे कहा there are many advantages, that is the reason people are coming over here. And legally if we see, the recognition has been given to it under section 89 of CPC. This is very important provision for you if you are reading about ADR, if you are reading about arbitration conciliation. आपका बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है. ये कहाँ से आया है, कौन सा प्रोविज़न लीगल वैलिडिटी देता है इसे. सेक्शन 89 के हिसाब से जो रेगुलर कोर्ट है मैटर्स रेफर कर सकता है फॉर दीज रेजोल्यूशन सिस्टम्स. एंड you can check out section 89 for that purpose. It is talking about settlement of disputes outside the court. इसमें लोक अदालत का कंसेप्ट भी कवर होता है. एक्चुअली ये कंसेप्ट काफ़ी वास्ट है, बट मैं इस वीडियो में ज़्यादा डिस्कशन आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट पर करूँगी, बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम द एंगल ऑफ सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन, इस एग्जामिनेशन के लिए जो इम्पॉर्टेंट है. लेट अस अंडरस्टैंड द सोर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया. मॉडल लॉ है यूनाइटेड नेशंस ने जो फ्रेम किया है, दैट इज द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, यूनिसिट्राल. दिस हैज़ एक्चुअली अडॉप्टेड United Nations has actually adopted this model law, जिससे हमें काफ़ी सारा आइडिया आया है. एंड यहाँ से वी कैन से आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट भी आया है. So this is the source of this particular legislation. We can understand it like that. And what is the basic idea about it? These disputes, these are always going to be civil or quasi-civil in nature. Contractual है या नहीं है does not matter. If there is an existing legal relationship, these methods can be resorted to. मीडिएशन जनरली मैंने आपसे अभी कहा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के लिए रेफर होता है, सिविल केसेस के लिए भी होता है. नाउ फ्रॉम सेबी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आप देख रहे हैं ये सिलेबस मैंने नोटिफिकेशन कटआउट शेयर किया है फेज़ 1 एंड फेज़ 2 दोनों का. फेज़ 1 में आपको दिखेगा आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन पॉइंट नंबर 10 पार्ट 1 है सिर्फ, एंड फेज़ 2 में आपको दिखेगा दैट इट इज़ पार्ट 1, 3 and 4. The syllabus, I would say, of this act is very concise and very short. The act is also very short. You are having only 3 parts. ज़्यादा difficult नहीं है. That's why I would say कि ये काफ़ी scoring हो जाता है आपके लिए. अगर आप previous year questions refer करोगे, इस topic से काफ़ी questions आए हैं. 5% का अगर वेटेज है, तो अगर आपको उतने क्वेश्चंस मिलते हैं एंड ईजी लेवल के हैं, देन यू कैन डेफिनेटली स्कोर वेरी वेल. सो दैट्स व्हाई आई वुड सजेस्ट कि आप इन टॉपिक्स पर अच्छे से ध्यान दें जो इजी हैं, जो आप इजीली रिटेन कर सकते हो, रिमेंबर कर सकते हो इन द एग्जामिनेशन, एंड इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हो. दैट्स व्हाई यू शुड ऑलवेज टेक नोट ऑफ दीज टॉपिक्स. Questions. Which of the following is not true about judicial intervention in arbitration proceedings? Which of the following is not true? Now don't forget to focus on the word not true over here. Okay? Which of the following is not true about intervention in arbitration proceedings? Judicial intervention और arbitration proceedings से related काफ़ी questions कई बार पूछे जा सकते हैं. Conceptual clarity होना बहुत ज़रूरी है. So there are 5 options. You have to choose the best option which is not true. Okay, ये गलती बिल्कुल मत करना, because students जल्दी में not true word skip करके उसे true समझ लेते हैं. So the answer for this question is no judicial authority may intervene in arbitration proceedings in any case. So this is not true. There is judicial intervention that is permitted, and that is actually limitedly permitted. Section 5 इस टॉपिक को डायरेक्टली कवर कर रहा है. That is talking about extent of judicial intervention. Let us see question number 2. A communication through WhatsApp providing a record of agreement to arbitration shall. अभी arbitration agreement के बारे में है. काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है arbitration conciliation act से.
अब इन्होंने यहाँ पर आपको एक सिचुएशन दी है, वी कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दैट, कम्युनिकेशन थ्रू व्हाट्सएप है, whether it will amount to an arbitration agreement or not, that is the question, and that is something which we have to have conceptual clarity on. Answer is C, amount to an arbitration agreement in writing. इसके लिए वी हैव स्पेसिफिक प्रोविजन, सेक्शन 7 आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के बारे में बात करता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन। उसका क्लॉज 4 अगर आप रेफर करोगे, you will find that telecommunication including communication through electronic means, you can see that over there, that is what is providing your direct answer to this question. Third question, rules relating to jurisdiction of an arbitral tribunal shall be made by. Now arbitral tribunal related jurisdiction, जो भी tribunals आप पढ़ोगे for this exam, I would say उनकी jurisdictions पे conceptual clarity आपको होना चाहिए, whether it is company law tribunal, whether it is company law appellate tribunal, or whether it is arbitral tribunal. Supreme Court, High Court, presiding arbitrator, arbitral tribunal, or the parties themselves. Who is going to rule on that? Very basic question, and if you know it, it is very easy to score. Answer is D, the arbitral tribunal will itself do that. And this is the direct provision, section 16, competence of arbitral tribunal to rule on its own jurisdiction. The mandate of an arbitrator can be terminated if. Now this is talking about the authority or the mandate of the arbitrator, that is there. Civil court के इक्विवेलेंट तो नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि आउट ऑफ कोर्ट प्रोसीजर्स हैं, देयर इज अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, सो उनके अथॉरिटी पर अगर क्वेश्चन आता है, सो व्हाट विल बी द आंसर? ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म हिज फंक्शंस डी फैक्टो, डी ज्योर, he only withdraws from his office, or the parties are mutually agreeing to terminate his mandate, or all of the above. क्या रीजंस पर टर्मिनेशन हो सकता है आर्बिट्रेटर का? ये सिंपल मतलब है इस क्वेश्चन का। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे मोड्स जो आप देख रहे हो, दीज आर अ पार्ट ऑफ सेक्शन 14, फेलियर और इम्पॉसिबिलिटी टू एक्ट. So this is also something which you can be asked. So it is an important area. I have tried to cover each and every important area as much as I can in these set of important questions. You can go in a similar manner, solve mock tests and previous year questions. The last question for today's discussion is, in case parties adopt a fast track procedure for arbitration. Now this is something which is novel and can be questioned. Parties may agree to appoint a sole arbitrator, or else the court may on an application made by the parties appoint sole arbitrator. Parties may agree for sole arbitrator but appointed by high court. So moto appointment हो सकता है, या फिर कोई स्पेसिफिकेशन अगर है अपॉइंटमेंट के बारे में, देयर इज नो स्पेसिफिकेशन, ऐसा है. सो द आंसर इज गोइंग टू बी बी. एप्लीकेशन पार्टीज को ही करना होगा कोर्ट में एज पर इट्स डिस्क्रिशन, दैट्स व्हाई द वर्ड मे इज यूज्ड, डिसाइड वेदर अ सोल आर्बिट्रेटर हैज़ टू बी अपॉइंटेड और नॉट. ये किसके केस में है? फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के केस में है. सेक्शन 29B, यहाँ पर अगर आप सेक्शन भी याद रखते हैं, दैट विल बी बेनिफिशियल. So this was all that I had to discuss with you all, that was very important from Arbitration and Conciliation Act. ऐसे ही और queries या questions अगर आपको चाहिए, या आपके कोई queries हैं, you can write to us in the comment section of this video. We will surely try to get some beneficial solution and guidance to it. Thank you everybody. Don't forget to subscribe.